Okay, so we have done till now the classification of integral equation as in Fredholm, Volterra, homogeneous, inhomogeneous, and then we had also seen first kind, second kind, and so on. So now, and also in the next chapter, we saw how to solve homogeneous Fredholm integral equation when the kernel is a separable kernel, right? So based on that, we have few problems. So you will be starting with this first problem. You have to find out the eigenvalue of the given Fredholm integral equation. So this is the Fredholm integral equation given to you. You have to find out the eigenvalue. This is the GATE 2011 question. Okay, so everybody will be doing this. Karo beta. So I'll discuss after 5 minutes. Start doing this question number 1. Am I audible? Yes, ma'am. Okay, beta. So start doing this first problem. It's very simple. So whatever we had done yesterday, so you can go through by that. So you note that your kernel here is a separable kernel, and you use that fact to find out the eigenvalues here. So some students have joined now. So we are doing this first problem. Everybody start doing this first problem based on what we had done yesterday. Anybody got the answer? Ma'am, 4. Yes, 4. Yes, ma'am. 4 R lambda. Okay, so let us see how we are getting 4. So your first problem is y of x is equal to lambda 0 to 1 x square t yt dt. So what you will do, you will just take x square outside. So this is lambda x square 0 to 1 t yt dt. So maybe you have done with that calculation of alpha 1 1. That also you can do. But here, because there is only one term in your separable kernel, so you can just call it as c. Whatever this thing is, you call it c, right? So you have y of x is equal to lambda x square c, where c is your 0 to 1 t yt dt. So what you need to compute c, so you can put this value of y here. So c is 0 to 1, lambda is also there. Okay, no, t yt lambda x square c, fine. Some lambda t square c dt, is that okay? So this is your lambda c t cube integration, that will be t4 by 4 0 to 1 equal to Excuse me, ma'am. yes beta. मैम अंशुल को लेट इन कर लो. Okay.
So here you have 4c is equal to lambda c. So you have 4 minus lambda c equal to 0. So you get this system of equation, right? And we want this to be 0 for c to be non-zero. 4 minus lambda equal to 0, that is lambda equal to 4. So this is your eigen value. Is that thing clear? So you see, very simple question जो आपको गेट में आया हुआ है. So this is your answer. Clear? Yes, ma'am. Anybody having doubt, beta, please ask. Okay. Now, yesterday I have given you one problem. करी है किसी ने? So this is that type. I will do it at the end. Then we will discuss that question also, which I have given to you yesterday. So you go for this third problem. Everybody go for this third problem. Okay. Then we will go to the second problem. Third कीजिए. I'll discuss after 5 minutes. Everybody try this third problem. Let me know when you are done. मैम लैम्डा जब निकल आएगा फिर उसके बाद कैसे करेंगे? जब लैम्डा आ जाएगा बेटा, आप आइगन फंक्शन फाइंड करो ना कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा जो आएगा वो क्या आएगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट सिस्टम.
इसमें आपका नॉन जीरो एक सॉल्यूशन आएगा ना, दैट इज योर सॉल्यूशन। सी की वैल्यू आ जाएगी ना एक। मैम जैसे वो तो 1/2 मतलब ए की मैट्रिक्स बनी ना जैसे। हाँ तो सी, इसका मतलब सी आर्बिट्रेरी है, इसमें सी कुछ भी हो सकता है। जैसे कल जो हमने किया था उसमें C1 C2 थे, so either we were Yes, ma'am. getting C1 in terms of C2 or we were getting one of them is 0 and one is taking arbitrary value. यहाँ पे 1 × 1 का सिस्टम है, तो C will take any arbitrary value, so you will just get the value of lambda. Okay, let me do it. मैम लेम्डा की वैल्यू आ रही है 2/e⁻²। Is that a 2 upon e square minus 1? Yes. Let me do it, beta, for everybody. So this is your problem. Y of x is equal to lambda 0 to 1 e raised to power x e raised to power t y t dt. अल्फा निकालना है, कैसे करना है? अल्फा 1 1 निकाल लीजिए, दैट विल बी क्या आएगा बताइए? 0 to 1 e raised to power t e raised to power t dt e raised to power 2t by 2 0 to 1. ये सबको क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. यस मैम। बाकी लोग बेटा प्लीज स्पीक। Yes, ma'am. ओके, सो योर सिस्टम बिकम्स, क्या बनेगा बेटा बताइए? सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या बनता है? 1 minus lambda alpha 1 1 c equals to 0, right? So you have 1 minus lambda e square minus 1 by 2 c equals to 0, and we want it to be equal to 0 so that c is non-zero. So you get lambda equal to 2 upon e square minus 1. So this is the eigenvalue, and the corresponding solution is C can take arbitrary value. Fine. So your solution will be, solution क्या है आपका? Solution will be y of x is equal to lambda c fx, right? So this is lambda is your 2 e square minus 1, c is arbitrary, f of x is e raised to power x. So this is the corresponding eigenfunction, or this is your solution, where c can take any non-zero value, where c can take any non-zero value. Is that thing okay? Yes, ma'am. Okay, beta. So this is how you solve. Okay, let me do the second question, and similarly you can do the problem which I have given you yesterday. So second is, can anybody think कि ये जो हमने कल मेथड डिस्कस किया है उससे हो जाएगा ये? If yes, तो आप करो, अगर नहीं तो tell me the reason कि whatever we had discussed yesterday वो टेक्निक यहाँ पे लगेगी कि नहीं, बताइए। जो कल हमने डिस्कस किया उसमें क्या हुआ था? हमारा कर्नल सेपरेबल था, तो हमने some integration things we have called them as constants, and then we have constructed a system of equation, वहां से हमने वो constants की वैल्यू निकाली थी। यहाँ भी क्या है, यहाँ पे जो फंक्शन k है, राइट, वो कैसे डिफाइंड है? when x is between 0 and t it has a certain different value, and when it is from t to 1 it has a different value. It means that you have to break this integral. Fine. So no longer your limits of integration, they will not be constant. That is why the technique which we had discussed yesterday will not work here. Is that thing clear? Yes, ma'am. So let us see. ये आप वैसे नहीं होगा. So that is why I am doing the second question. So आपने इसको ध्यान से देखना है, फिर वैसे ही आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे होंगी आपकी जहाँ पे आपका k जो है वो इंटरवल्स में दिया हुआ है. So the question is again find the eigenvalues and eigenfunctions of this equation. Y of x is equal to lambda 0 to 1 k xt yt dt, where k xt is x t minus 1 0 less than x less than 1 less than t, sorry, and it is t x minus 1 when t less than x less than 1. Fine. So how you will solve it? So you will write your equation as y of x is equal to lambda. You will break this integral
0 to x kxt yt dt plus x to 1 kxt yt dt. Is that thing clear? मैंने break कर दिया अपना integral. These are the limits for t. T is from 0 to 1 and x is between 0 and 1. So that is why I have taken 0 to x, x to 1. Why? Because this is how the function is given. Now can you tell me what is the kxt when t is between 0 and x? Here you have this situation, t is between 0 and x. Here you have t is between x and 1. So यहाँ पे k की वैल्यू क्या है बताइए? t is less than x. ये वाली वैल्यू है ना? So here the value of k is tx minus 1 yt dt 0 to x. Clear? And here x is less than equal to t, so this case. So that is why the value of kxt is x t minus 1 yt dt. Lambda equals to y of x. Clear? कोई डाउट यहां तक किसी को? मैम ये लास्ट स्टेप ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है. ये देखो ना बेटा, इसमें ये t की लिमिट्स है ना, ये सही है, t की लिमिट्स है. इसका मतलब इस इंटीग्रल के लिए t इज बिटवीन 0 एंड x, है ना? Yes, ma'am. और यहाँ पे t इज बिटवीन x एंड 1. ये क्लियर? अब जब यहाँ पे देखिए ना, t लेस देन इक्वल टू x के लिए कैसे डिफाइंड है कर्नल, ये रहा. और यहाँ पे क्या है, x लेस देन इक्वल टू t, ये वाला केस, उसके लिए कर्नल कैसे डिफाइंड है, ये रहा. ठीक है मैम. ओके. Got it? Anybody else having the doubt? Any doubt you can ask? Okay. Now, what we will do, we want to get rid of these integral signs. So, do you know anything जिससे हमारा ये integral signs खत्म हो जाए? You differentiate it. Differentiate with respect to x. So what will happen? Left hand side you will have y dash x equal to lambda. इसका derivative with respect to x कैसे होगा बेटा बताइए? How you differentiate it with respect to x? वो लगती है, मैं नाम भूल गई उस चीज का, क्या होता था? Leibniz Yes, ma'am. Leibniz rule for differentiation under integral sign क्या होता है बेटा वो बताइए? पहले अपर लिमिट पुट कर देते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट कर देते हैं. नहीं. So first of all, 0 to x, you will differentiate inside partially with respect to x. Curly by curly x of t x minus 1 yt dt. Then you have plus upper limit का derivative with respect to x into inside you will put x. So that will be x into x minus 1 y of x minus lower limit का derivative with respect to x into यहाँ पे आप x की जगह पे t की जगह पे lower limit put करोगे, that is 0. Is that okay? And here again similarly, so it is plus x to 1 curly by curly x of x t minus 1 yt dt minus plus upper limit का derivative, that will be 0, minus lower limit का derivative with respect to x, that will be 1. Okay, into inside you will put x in place of t, so that will be x minus 1 y of x. Clear है सबको? Differentiation under integral sign. Let me write down अगर आपको याद नहीं है. So if you have alpha x, beta x, some function of x and t dt, and you want to differentiate it with respect to x, so this is equal to alpha x, beta x, derivative of inside integrand जो भी है with respect to x, that will be partial, plus derivative of the upper limit into f x alpha x minus derivative of the lower limit into f x beta, sorry यहाँ पे beta, यहाँ पे alpha. Is that thing clear? So this is your Leibniz rule and for differentiation under integral sign. Got it? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
तो ये क्या आ जाएगा? I think this term and this term will cancel. Yeah, these two will cancel. So you have y dash of x is equal to lambda. You see यहाँ पे क्या आएगा? Differentiation with respect to जब x करोगे, बताइए. So you will just, this will be 1. ये t as such, t by t आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा t minus 1 by t, right? So you will get lambda दोनों के साथ है, so I'll just write separately. So you will get the first term is 0 to x lambda t by t dt, and the second term is x to 1 lambda t minus 1 by t dt. Okay, is that thing okay? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, now you again differentiate with respect to x. Still there are integral signs with respect to x. So you'll get y double dash x is equal to, करो इसको दोबारा. So जब आप पहली बार लगाओगे अंदर there is no x, so पहली टर्म 0 हो जाएगी, this one, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी. फिर उसके बाद प्लस dx by dx into अंदर वाली टर्म में y की जगह पे x पुट कर दीजिए. Next term is also 0. Here also when you will put differentiate, पहली टर्म 0 हो जाएगी, सेकंड टर्म भी 0 हो जाएगी, थर्ड बचेगी माइनस dx by dx into lambda x minus 1 y of x, right? So you get y double dash x is equal to, ये मान हो जाएगा lambda x y x, और ये क्या आएगा आपका माइनस lambda x y x plus lambda y of x. This and this will cancel. So you have y double dash x minus lambda y of x is equal to 0. So what you have done, you have converted your integral equation into a differential equation. Is that thing clear? So whenever your k is difficult to handle, you can convert your integral equation into a differential equation. Although most of the applications include converting differential equation into integral equation. Okay, so we will see that generally what we do, we convert differential equation into integral equation and then we solve it. But when your k looks like this, जो इस क्वेश्चन में, when your k is something like this, it is always easy to convert the integral equation into a differential equation. Clear है बेटा सबको ये चीज? So we just differentiated twice the given integral equation and got a second order differential equation. In the solution, if we find out yx from here, obviously this is a solution of your integral equation also. किसी को doubt इसमें? No. Now, what else you need to solve this differential equation? You also need the boundary conditions, right? So can you see from where you can get the boundary conditions? You see, if you put x is equal to, okay, from y, if we look at y, this is your y, right? So if you put x is equal to 0, क्या आएगा? ये वाला इंटीग्रल क्या हो जाएगा? 0, और ये वाला इंटीग्रल भी 0 हो जाएगा क्योंकि x 0 है. And when you put x is equal to 1, तब ये वाला इंटीग्रल 0 हो जाएगा, and ये वाला इंटीग्रल भी 0 हो जाएगा. So our boundary conditions are y of 0 is 0 and y of 1 is 0. So these are the boundary conditions. Is that okay? Now you solve. Now you want a non-zero solution. You are looking for a non-zero solution. Can you find out one? Everybody, can you give me a non-zero solution of this equation satisfying these boundary conditions? Yes. करो बेटा सब लोग. That will be the solution of the given integral equation, and the value of lambda which you will select will be your eigenvalue. Tell me the answer. में तो 0 ही आ गया. 0 कैसे आएगा? क्या आया आपका आंसर? कैसे किया?
d की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट लैम्डा, फिर y को लिख देंगे c1 e की लैम्डा x प्लस c2 e की माइनस लैम्डा रूट लैम्डा सॉरी x। नहीं बेटा, लैम्डा क्या है उस पर डिपेंड करता है ना। अगर लैम्डा आपका मान लो नेगेटिव हुआ, यस मैम। है ना, so you have to make cases where lambda is 0, lambda is positive and lambda is negative, because lambda ही तो हमने एक ऐसा फाइंड करना है जिसके लिए आपका नॉन जीरो सोल्यूशन आएगा, है ना। so you cannot assume that lambda is positive. So you see, let us assume when lambda equal to 0, in that case y double dash x is equal to 0. So you have y of x is equal to a plus bx. So y of 0 equals to 0 gives you a equal to 0, and y of 1 equal to 0 will give you b is equal to 0. Therefore, y of x is equal to 0 is the solution, which is not trivial. So we are not interested, right? So second is, जीरो और मैम जीरो और पॉजिटिव के लिए ट्रिवियल और नेगेटिव के लिए लैम्डा की वैल्यू आती है n स्क्वायर पाई स्क्वायर। n स्क्वायर पाई स्क्वायर आ रहा है, मेरा यहाँ माइनस लिखा हुआ है। Let us just check. Okay, yeah, n square pi square, I guess. So n अगर आपका पॉजिटिव है तो you will assume lambda अगर पॉजिटिव है you will assume it to be square of something, जैसे हमने उसमें किया था फूरियर में. So it will be y double dash minus mu square y equal to 0. So you have m square minus mu square equal to 0. This is your auxiliary equation. So m is equal to plus minus mu. So you get y of x is equal to c1 e raised to power mu x plus c2 e raised to power minus mu x. Now y of 0 equals to 0, that gives you c1 plus c2 equals to 0, and y of 1 equals to 0, that gives you c1 e raised to power mu plus c2 e raised to power minus mu equal to 0. And you solve here, you will get c1 c2 equal to 0. Therefore again you get y of x is equal to 0, which is trivial. Fine. So we will take lambda negative, you take lambda is equal to minus mu square. So you have y double dash minus mu square, okay, minus mu square into y equal to 0. So you have m square plus mu square equal to 0. This is your auxiliary equation. So m is equal to plus minus mu iota. So your y of x looks like c1 sine of mu x plus c2 cos of mu x. Now y of 0 is equal to 0, that gives you c2 equal to 0. So your y of x is c1 sine mu x, and y1 equal to 0, that gives you c1 sine mu equal to 0. Now if c1 is 0, we again get a trivial solution. We are looking for a non-trivial solution. That is why you will say sine of mu equal to 0, that gives you mu is equal to plus minus n pi. Fine, plus minus n pi. So for this value of mu, you have a non-zero solution, and c is arbitrary, c1 is arbitrary, and solution will be y of x is equal to c1 sine n pi x. Plus minus will be consumed in this c1, okay, c1 arbitrary. So this is your solution. And what is eigenvalue? Eigenvalue is lambda is equal to minus mu square. So that will be minus n square pi square. Minus aa raha na beta? Yes ma'am. Got it?
So this is how you will do these problems. Now you can try the one which I have given you yesterday. कल मैंने साइन वाली दी थी ना बेटा आपको. Yesterday I have given you this problem. Y of x is equal to lambda 0 to pi kxt yt dt, where kxt is equal to cos x sin t for 0 less than x less than t, cos t sin x for t less than x less than pi. Okay, I will tell you the answer for this. So here you will get your solution as y is cos n plus half x, right, with a constant multiplied, and lambda is 1 minus n plus half square. ओके बेटा, सो ये कर लेना. सिमिलरली है जो हमने भी किया ना, सेम चीज आप करोगे. Now you can ask me your doubts if you have any from the integral equation. कोई भी डाउट है बेटा पूछ सकते हो. समझ आ रहा है सबको? Yes, ma'am. Okay, so you have no doubts. No doubts is a bad thing. पता है आप लोगों को? इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं की. अच्छा, क्या कर रहे हो आजकल? MSc की तैयारी शुरू कर दी? हाँ जी. मैम कंफर्म ही नहीं हो रहा कि होंगे या नहीं होंगे. बेटा आपको मैं बता रही हूँ, मतलब 99% आपके वही होगा कि आपके 3 टेस्ट होंगे. ठीक है, वो भी मतलब हमारे लेवल पे, जैसे मैंने आपको क्विज दिया था, बट उस थोड़ा डिफिकल्ट होएगा. सो वी विल बी कंडक्टिंग 3 टेस्ट. 30 मार्क्स का है ना आपका, तो 30 मार्क्स का आपके 3 टेस्ट होंगे. सो अभी तक कंफर्म नहीं है, बट स्टिल ये प्रोबेबल है कि यही होगा. और मैंने ये सोचा है कि हमारे जो 3 टेस्ट होंगे, 3 टेस्ट, सिलेबस हमारा एक्चुअली है 15 अक्टूबर तक. तो वी कैन प्लान समथिंग अगर आपको वो चाहिए. We will obviously execute it after we get an official email, but we can plan something like कि आपका मैंने फूरियर कवर करवा दिया है, लैप्लास है ना, COV, राइट. इंटीग्रल इक्वेशन वी विल नॉट टच. तो इसमें पहले हमारा ये और ये हम MST के लिए प्लान कर रहे थे, राइट. सो आई एम थिंकिंग कि आपके 3 टेस्ट हैं और तीन जो है वो अलग अलग उसके होने चाहिए, अलग अलग टाइप के. तो जैसे एक हम क्विज प्लान कर सकते हैं, 1 या 2 क्विज प्लान कर सकते हैं, एक 1 ओपन बुक एग्जाम. आप लोग बताओ कैसा रहेगा ये? क्या क्राइटेरिया रहेगा, मतलब कैसे लेंगे हम? ओपन बुक में बेटा आई विल जस्ट गिव यू पीपल सम क्वेश्चंस, बट वो डिफिकल्ट रहेंगे जो आपको ऐसे जनरली नहीं मिलेंगे, राइट. सो आप अपना किसी से कहीं से भी कंसल्ट कर सकते हो, और आपको जैसे टाइम दे दिया मैंने कि आधे घंटे के अंदर आपने ये 2 क्वेश्चन करके सबमिट करना है, समथिंग लाइक दैट. और क्विज तो आपका जैसे क्विज होता है LMS पे होगा या गूगल फॉर्म पे, जैसे मैंने पिछली बार लिया. 3 मार्क्स ईच होगा ना या 30 मार्क्स ईच होगा? 30 मार्क्स ईच ना. बेस्ट ऑफ 2 लगेगा मैम. बेस्ट ऑफ 3 लगेगा. बेस्ट ऑफ 3 में से 2 लगेंगे. बेस्ट ऑफ ओके, या जितना का भी ले लो बेटा, वेटेज ही बनानी है वो तो. चलो हाँ ठीक है, 15 का कर देंगे हम. ठीक है. क्विज में ना एक्चुअली वही है कि अगर 15 मार्क्स का क्विज है तो उसमें चीटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो जितना भी होगा फाइनल आप 2 बेस्ट लगा के उसकी एवरेज हम उसका वेटेज 30 में से कर देंगे. दैट्स इट. यस है ना? फाइन. सो आई एम प्लानिंग लाइक दिस, 2 क्विज, 1 ओपन बुक एग्जाम. बाकी तो अभी आई एम वेटिंग कि हमारा ऑफिशियली कुछ आ जाए. बट ऑब्वियसली आप ये इसी चीज के लिए मुझे लग रहा है आप लोगों को तैयार रहना चाहिए. ठीक है. अगर नहीं कुछ कंफर्म हो रहा है ना, चुपचाप अपनी पढ़ाई करो जो आपके लेक्चर्स लग रहे हैं. दैट्स इट. है ना? क्योंकि नेक्स्ट सेशनल भी आने वाला हो गया. नेक्स्ट सेशनल तो मैंने लेना है ना 15 मार्क्स का. जैसे इसमें MSc में तो 3 में है, बट गया आपका सब कुछ. ये तो 15 मार्क्स पूरे एक सेशनल के हैं, है ना. वो भी लेना है मैंने. सो आप बताओ सेशनल ले लूं पहले? यस मैम, सेशन ले लो बेटा, बताओ सब लोग, बाकी लोग. यस मैम ले लो मैम. नेक्स्ट वीक लोगे? बताओ कितने लोग हैं? अंशुल, अंजलि, दीक्षा, एवरीबॉडी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. टेल मी इफ यू वांट
मी टू कंडक्ट अ सेशनल, तो आपका एटलीस्ट 25 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा. 10 मार्क्स का ऑलरेडी हो चुका है. कैन वी गो फॉर सेशनल? उससे Yes. आपकी एमएसटी की भी तैयारी हो जाएगी. Yes, ma'am. यस मैम ले लो. बाकी बोलो बेटा. Yes, ma'am. यस मैम. Yes, ma'am. So can we plan for Fourier? Sessional from Fourier? Fourier के मिलेगा 5-6 लेक्चर हैं. That's it. Yes, ma'am. यस मैम सही रहेगा. ठीक है बेटा. So everybody next Thursday ले लूं. Yes. बताइए. मैम वी कैन प्लान मैम, बट कुछ डेट का ऊपर नीचे हुआ तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, बट नेक्स्ट वीक का रखते हैं. ठीक है बेटा. So as of now we plan that next Thursday 15 marks Fourier. ठीक है बेटा. क्विज जैसे मैंने पिछली बार लिया था. Simple. This is your sessional. ओके मैम. Okay बेटा. Please like सबको बता देना ये. So we will go for this sessional next Thursday. Yes. Okay, then MST EST रह जाएगा. That we will see. ओके मैम. Okay then.